हेलो फ्रेंड्स। पहले अप्लाई करना कितना मुश्किल रहता था, लेकिन जब से मुझे अपना ऐप मिला है और बाकी ऐप के कंपैरिजन में अपना ऐप इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी एक्टिव। डे टू डे बेसिस पे उसका अपडेट इतना अच्छा है। उसमें इतने सारे कैटेगरीज हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, पार्ट टाइम, मीन्स हर तरह की कैटेगरी है, सबके लिए सूटेबल है। हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो, सब तरह की कैटेगरी उसमें मिलती है। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, और फास्ट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है उसमें। सो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद अपना ऐप। थैंक यू। हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए, लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज, जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें, या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Yeah, hi everyone. Thank you so much for joining and happy Women's Day to all. हम अपना सेशन जल्द ही शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, I'd like to invite our host here, Charul. Thank you so much for joining here. Charul agreed to join us on this special occasion of Women's Day to, guide us all and give us the opportunities to understand how we can propel ourselves, especially in this tough world out there, and how we can, grow as a professional. Just a couple of lines about Charul. So she's a professional career coach and has been mentoring thousands and thousands of people over the last few years. Her experience speaks for herself, and she's a very popular Instagram influencer as well, with over 230K followers on her account. She's also the head of her own company. And instead of me saying anything more about Charul, I think it'll be best if you give us a brief introduction about yourself and to all our guests here. Hi, Dipanjan. How are you doing? I'm doing good. How are you doing? I am absolutely fine. Hi, everyone. Hi, Nidhi, Jia, Gauri, Sneha. I welcome you all to this session. With this session, we will try to understand how we can, have that first impression on the recruiter. And as a recruiter myself, I think this needs to be, we need to give this back to the candidates, so they understand what recruiters are actually looking for in their resume. So to give you a quick understanding of what I've done and what I currently do, I'm currently a career coach. I manage a career content page with the name of Career GPT. I think like few of you would have been joining from that page itself. And apart from that, I am heading a Hiring Blogs, which is a recruitment consulting firm where we hire for technology companies. So I work as a recruiter and a hiring manager, and then on the other side of it, I train and guide students towards their dream careers. That's pretty much about me. We'll just start in the next few minutes.
Yeah. So we'll just wait for a couple of more people to join. We're just waiting for their confirmations to come in, Okay. and once they join in. So in the meantime, just wanted to add a little bit about Apna as well and their journey towards, the contributions that we have done towards women empowerment. So I'll be sharing my screen and share a quick presentation just while we wait in this duration. Sure. Yeah. Yeah. So this is basically an insight of what we have seen as a pattern on our platform. Ideally, just to understand the different trends that women have overall taken in terms of applications to job and the recap summary of how 2023 has been on our platform. I hope that these insights do help the members here on the call and they find something interesting here. बस खुद की सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये बुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है So I'll just take a couple of minutes to quickly summarize here. So what we've seen over the last year as a trend is that over 33% people who applied for jobs in the section were women, and one of the primary roles that we seen a trend in a rise in terms of applications came from departments like HR, finance, front office, and marketing roles. Additionally, a lot of these applications came for salaries which are above 45,000, which is technically around 4 million applications. And additionally, there were another 60% of other applications that came in for salaries above 30K. So we have definitely seen an increasing trend through our platform, and we are trying every day to, ensure that this is a platform which can definitely help women all over the country. For the very reason to promote this is also creating these communities that we have specifically on the Apna app, which is a women community where you can definitely check out and see what various options are there. You can network with like-minded people and also find a useful space to learn and grow. We also have influencers like Charul on our platform to guide us. You can always join the communities, communicate with them, get in touch with them, and reach out to them even outside our platform. And yeah, we are happy to have this event today and have Charul as our host for this and to guide us through this session. Over to you, Charul. I'll not take any much of your time. You can get started. Yeah. Thank you, Dipanjan. I was very excited to see these numbers. We are, heading to a place where we can finally say that, there are platforms that are taking women candidates seriously. So kudos to Apna team. Um, I think we have almost 12 people here. So should we start with the session and people can come and join? Or... Yeah. We can get started. People will keep coming in as and when we go ahead. Yeah. Yeah. So guys, hello. I would appreciate if you guys can, turn on your camera because I want this session to be very engaging and I want you to ask questions. I want, to have conversations with you guys and understand your pain points and what is, things that, you are not able to understand when it comes to resume or an ATS friendly resume. So if you guys can share your camera, if you can just share your screens. Hi, Afreen, how are you? No problem, Sejal. I hope you are, I just want you guys to be interacting with me and let's just engage and
have a fruitful conversation. It's not a session where only I will speak. I want everyone's contribution here. Okay. So I'll share my screen. Also, guys, just adding one more point. If you have any questions that you want to ask at any point of time, do add it on the chat here. I'll be taking note of all the questions that you have, and we'll have pauses in between so that we can address these questions. We'll also give you opportunities to speak. You can raise your hand, and then you can ask your questions, have discussions, and interact with Charul. But yeah, whatever you want to do, please ask on the chat or raise your hand, and we'll keep note of everyone who wishes to contribute and engage here. Thank you, Dipanjan. Um, I guess you guys already know about me, so we'll just move to what it needs to write a resume that gets you hired. See, when you're writing a resume, you need to understand that it's not just a list of your work history or, just listing down your experience and your education and your age. This is not what your resume is about. You need to understand that your resume is actually a marketing tool, right? That is the first thing that the employer will see, and that is the first thing that with which you'll be able to make a first impression. You can look at it as say you are going to a restaurant. It's a very beautiful restaurant. You love the vibe there, but then when you enter, the gate is a little shabby. It's cracking here and there. You will not have a very good first impression while entering that restaurant. So resume is the same. Even if you have like a fantastic, proof of work and a fantastic impact that you created in your workplace, but you have not made sure that you incorporate that in your resume, you will be missing out on opportunities. So the main reason to, build a resume, you need to understand it should be a marketing tool for you. You need to market yourself to the employer. And how do you do that? You need to market by showing your placing your best foot forward. And I want all of you to understand that you don't need to be humble while writing your resume. You need to boast all the skills that you have. So not just work history, but your impact, what you results you brought in that organization. Just show your personality altogether. Now, when we speak of resumes, the first thing that comes to our mind is ATS friendly resume. We've been seeing this word all over the internet. And I know a lot of you get confused. What is this ATS? And what are these ATS friendly resume that everyone keeps telling us about? So ATS is actually an applicant tracking system, which is like a software that employers use to manage the entire application process. So it's a system where the data is collected. If you submit your resume, it goes to the application tracking system. That application tracking system scans it and then ranks all the application. And how does it rank or scan the application? By keywords, right? For example, if I say that I am a recruiter and I am looking for a marketing analyst role. Now, through the ATS, that particular system will scan keywords that are relevant to marketing analysts. Okay, so marketing analyst, marketing analysis, or even if it's around data visualization, so Power BI, Tableau. So it kind of picks those keywords from your resume and then ranks the application basis those keywords. Now we need to understand how we make a resume ATS friendly. The number one thing that you can do to make your resume ATS friendly is you research different job descriptions. Make it a habit that if you, for example, you want to go into a role of sales, a sales executive, say. Now, when you are looking for a sales executive role, make sure you go to 10 jobs, read their job descriptions point by point, scan for the keywords, and most importantly, look for the job title. If it says sales executive or sales, analyst, whatever it says, make sure that your resume headline, the first line of your resume, has that word, because
That will make you at the top of the search results. Now, apart from the job title, you also need to pick out skills or keywords from that job description and put those skills or keywords in your resume. Now, the third point, use keywords properly so the ATS can read them. Uh, a lot of times you'll find that, say you are into customer relationship, right? You are doing customer relationship management. Some people would write this as CRM and some would write as customer relationship management. See, ATS is just a bot, right? It's a like it's not an actual human being, so it will get confused if I only put the keyword customer relationship manager in my system and it is only picking that from like resumes. People who have written CRM will, not get past that ATS system. So make sure that you use keywords properly. If you can scan the job description and make sure that you pick those keywords, that's the best thing. Otherwise, also, if you are looking for a particular job, make sure you find out all the relevant skills and all the relevant keywords for that particular job and incorporate that in your resume. Also, the most important thing, choose an ATS friendly resume. And what is this ATS friendly resume format? I'll share it across with you as well after this call, but let me show it to you. This is like a basic template that is also ATS friendly. You have to understand that if you're using a lot of graphics in your resume, a photograph, and a lot of like small icons, it will not be read by the ATS system, right? So make it very easy to read, very simple, so that it is easily scanned by the ATS. Avoid using any tables or any infographics per se. You can obviously, the resume, the main thing that they'll want to read in a resume is your experience, is your impact that you could bring, and also your like key skills. So that is what you want to add in here. Swati, I'll take just you. sorry to interrupt. I think the resume that you were trying to show is not visible in the slide. Okay, no problem. I'll just, I hope it's visible now. Yeah, we can see. Yeah. Yeah. So this one is like a very basic resume template, and it is ATS friendly because I've not used any infographics, I've not used any, graphics or any icons, any tables. It's a simple, use of only words and like my experience. Now, I'll just take it one by one. So the first thing that you write would be your name. You can even, below your name, you can even write your job title if it's very specific. But I would suggest that you can even skip it. It is totally up to you. After that, put your city or state and country. Don't put your full address. It kinds of, uh, like you can be discriminated basis your complete address. For example, if you are living, um, in the suburban area and the office is at the other end of the city, they might think that with everyday commutation you would not be comfortable and they might reject you at that point itself. So make sure you are not discriminating yourself even before getting to the interview stage. So just put your city, your state and country. Even like if you're just putting your state and country, that's also okay. It's up to you, but don't put a full address here. Then your phone number, your email address, and hyperlinks to your LinkedIn profile or of any of your work. If you have like if you are if you have a technical profile, you have a GitHub profile, you can put that hyperlink here. Just any proof of work. LinkedIn is the best way to show what you have been doing. So that's the best thing that you can put on here. But otherwise also any hyperlink, any project link, whatever show your proof of work, you can put it here. After that, I would suggest you put a career summary. So there are, I've seen a lot of resumes where people start their resume with a career objective.
and they write what they are seeking in that particular role, right? तो say कि मतलब what I want, but that's not how you put in your resume. You have to put what your experience have been and what impact you will be able to create in the other role. आप ये समझो कि आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, राइट? अपने आप को मार्केट करने के लिए आपको ये नहीं दिखाना कि आपको क्या चाहिए, आपको ये दिखाना है कि उनके लिए आपके पास क्या है, तभी तो आप अपने आप को ना बेच पाओगे फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. So you will put your impact that you created in the past and what you can create in the future. ठीक है? You can start this line as I told you earlier कि आप जो भी आपका जो job descriptions आपने पढ़े हैं, जो वो role था particular, जो job title था, start with that and your experience. Say marketing analyst with 4.5 years of experience. Start it like that, and make sure you are not just copying or pasting your entire job history or job summary, job experience. No, you also need to make sure you have like it should be a personalized thing. Your resume is only yours. I read it somewhere, and I believe this is the best way to tell people how your resume should be. Your resume should be like a personalized version of you. आपका रेज्यूमे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बनाया और कोई और एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर पाए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ जैसे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने ये किया है और आपने वो ही लिख दिया, तो और लोग भी आपका कॉपी कर पाएंगे, राइट? बट अगर आप ये लिख रहे हैं कि आपके वजह से इतने जो भी आपका इम्पैक्ट है, आप सेल्स रोल में हैं तो आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी सेल्स कॉल्स ली आपने, क्या फनल था, अगर आप ये अपने नंबर्स मेंशन कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो जाएगा. अदर पीपल वुड नॉट हैव दैट सेम इम्पैक्ट, राइट, on within their job role. So make sure कि आपका जो resume है, it has your personal impact listed and not just your experience. So experience plus your impact, your big wins, whatever your achievements are, make sure you write that down in 3 to 4 lines. Now I understand a lot of you have this problem where you don't know how to write that career summary, है ना? Confusion आती है कैसे लिखें, मैम इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं है, खुद से तो नहीं लिख पाएंगे. Don't worry, we have AI these days, and you don't need to do everything on your own. Like if you are not a content creator, if you're a content creator, I suggest you write your own. But then if you're not a content creator, it's not your job, it's okay. You can just go on Chat GPT or Gemini, ठीक है? वहां पे जाओ, आप अपने वर्ड्स में जैसे भी आपको मतलब लिखा जा रहा है, अपना 3-4 लाइंस में एक्सपीरियंस आप लिखो वहां पे कि मैंने ये किया है, एंड बिलो दैट आप लिखिए उसके कि प्लीज राइट अ प्रोफेशनल समरी फॉर मी basis this experience and make it short, like 3-4 lines. आप जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो ऐसा आपको समरी लिख के दे देगा, बट आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से डालना पड़ेगा. एंड दैट प्रॉम्प्ट शुड बी कि आप अपना एक एक्सपीरियंस मेंशन कर दो, एक आपने कुछ अचीव किया हो वो मेंशन कर दो, एक आपने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया हो या कुछ नंबर्स हो आपके पास वो मेंशन कर दो. दिल राइट डाउन दिल राइट इट फॉर यू, राइट? अगर आपको पहली बारी में सही रिजल्ट नहीं, आप 2-3 बारी ट्राई करो, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यूज करो, ठीक है? बट it is the easiest way, and don't worry, it will be personalized to you because आपने अपने impacts डाले हैं, आपने अपने experiences डाले हैं. Any questions here for the summary part? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हाँ सेजल, आई थिंक आपके पास एक क्वेश्चन है. सेजल, you can unmute Hello. yourself. Yeah. Hello. Yes, Sejal, tell me. Actually, I have one question. Like, Yeah, tell me. I don't have a relevant experience in the data analyst field, but I want to go there. तो अच्छा. मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो फिर काम का नहीं होगा इसमें. हाँ, आपका you are like a fresher to that role, right? For data Yes, analyst sir. role, but you have some other experience. Yes, yes. Okay, what's your current experience like? Like it was regarding a research of the data on the different sites and storing it on Excel sheet. रिसर्च. तो आप देखो कि रिसर्च में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स, जो आप मेंशन कर सकते हो वहां पे, ठीक है? दैट इज Okay. वन पॉइंट, ठीक है? तो दैट बिकॉज दैट इज योर यूएसपी एंड दैट इज व्हाट you can use as a connector between your past experiences, your like your what the role that you're seeking, right? Okay. उसके अलावा आप कुछ अपने आप से, इंटरनेट पे सब फ्री है, ठीक है? Yes. You can just
check out videos on YouTube. You can just check out courses, free courses on Google. Like there are multiple sources right now. Yes, तो आप वो डेटा एनालिस्ट वाले जो भी कोर्सेज हैं, इफ इट्स स्पेसिफिक टूल, अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन स्पेसिफिकली सीखना है तो उसके जो भी टूल्स हैं, yes, sir. या फिर आपको एसक्यूएल्स आप सीख रहे हो, आप वो सब सीखो. एंड देयर आर सर्टिफिकेट्स आल्सो अवेलेबल. वैसे उनका सर्टिफिकेट्स का इतना जरूरी कुछ नहीं होता. इफ यू हैव द राइट स्किल, दैट इज इनफ. बट इफ यू गेट द सर्टिफिकेट, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मेंशन दैट like whatever you have gained, तो आप उसको भी समरी में लिख सकते हो. दैट वुड बी अ हेड स्टार्ट फॉर यू. ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं लिख सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू कैन like make your own projects, तो आपके Yes. जो प्रोजेक्ट्स होंगे डेटा एनालिसिस में पर्टिकुलरली, दैट कुड बी like an edge for you to find out roles in data analysis. People actually, if a recruiter is looking for a candidate in data analytics and a fresher, तो सबसे पहली चीज वो प्रोजेक्ट्स देखेगा कि आपने किस प्रोजेक्ट क्या टूल यूज किया है. तो आप टूल्स अपने समरी में मेंशन कर दो. ठीक है. आप अपना डेटा एनालिटिक्स के जो भी कीवर्ड्स है, डेटा विजुअलाइजेशन आपने पढ़ा है तो पढ़ा वो मेंशन कर दो. ठीक है. Okay, thank you. Okay, any other question? Yeah, I We think have we have. Jia. Yeah. Ma'am, I don't have any experience. I'm just a fresher. So what all can I write instead of experience? Jia, what are you currently doing? I am pursuing BTech in BTech. computer science. Have you done any internship or any project? I've done projects and I'm currently pursuing a training. So can I mention आप- that? या मैंने आपको बोला है, डोंट बी हम्बल व्हेन यू राइटिंग योर रेज्यूमे. आप जितना वहां पे बोस्ट कर सकते हो ना, आप करो. whatever you have done, any if it's unpaid, if it's paid, if whatever, if you have done something, it should be on your resume. हाँ, provided it's relevant to what you are kind of speaking. ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे डांस परफॉर्मेंस में पार्ट लिया है तो आप वो लिख दो. बट जिस टाइप के रोल्स में आप ढूंढ रहे हो, अगर आपके कॉलेज के करिकुलम में भी आपने कुछ ऐसा किया है, इफ एनी लाइफ प्रोजेक्ट, या आपने कुछ कोई आपका देयर आर अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग विद इन कॉलेज, तो आपने किसी उसमें पार्टिसिपेट किया था, कोई भी हाईलाइट है, कोई भी आपकी अचीवमेंट है, यू लिस्ट दैट डाउन देयर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. Thank you. ठीक है. एनीवन एल्स? या वी हैव लाइक अ इट्स ओके, कोई बात नहीं. आपका सवाल था कुछ जो आप पूछना चाहते थे? नहीं, आई थिंक नो. Yeah, I think it was my mistake. No worries. किसी के भी अगर कोई भी सवाल है आप चैट पे भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. हम आपकी क्वेश्चंस लेते रहेंगे थ्रू आउट द कॉल. I think पुरुषोत्तम जी, आपका कोई? Purushottam had a question. Yeah, I do have a question. Like, which is a good software to get it done, the preparation for the resume? Like, because most of the website which you are using, those all are paid. So after preparation of the resume, we'll come to know that it is a paid. So which will be the good Canva that which can be used without paid? Stay away from Canva, please. Canva ना आपका इतना infographics वाला resume बना के देता है, and no one likes that. ठीक है. अगर आप graphic designer हो तो अच्छा लगता है वो, है ना, graphics वाला. But आपका role, people want to read what you have done, है ना. तो उसके लिए मेरा simple suggestion होगा, Google document पे अपना resume बनाओ, simple बिल्कुल. ठीक है. I'll just show it to you. I'll share this template also. आप इसमें ही edit कर सकते हो. But can you see my screen? No. One second. Can you see it now? Hello? Yes, it's visible. है ना. तो ऐसा सीवी बनाओ, सिर्फ सिंपल गूगल डॉक पे. कुछ कैनवा या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपकी खुद की थोड़ी मेहनत लगेगी, but then this is the like a foolproof way of writing your resume. क्योंकि ये किसी भी ATS में मतलब आराम से it is very easy to like pass through the resume through the ATS. तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस very easy to read. बिल्कुल क्लीन है. ठीक है. मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा
फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, समरी, टेक्निकल। तो फर्स्ट ग्लांस से अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो रिक्रूटर के लिए इजी हो जाता है काम, आपका रेज्यूमे इजीली स्कैन करना। एंड जस्ट फोकस ऑन द राइट कीवर्ड्स, ठीक है। लेआउट बिल्कुल सिंपल रखो, फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल रखो। I also have one अंडरस्टूड? more doubt. Hello. या So, या टेल मी। like nowadays, the resume is also updated with the profile pic. People are they saying that we need to add like upload the profile pic to like look more attractive. How is on it? पुरुषोत्तम, मैं आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग, यू डू यू, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है आप कर लो, बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो आई वुड से कि अवॉइड पिक्चर। आप क्यों अपने आप को Okay. डिस्क्रिमिनेट करने के लिए पिक्चर लगा रहे हो, है ना। मतलब पीपल हैव यू नो लाइक आपके बारे में लोगों के व्यूज और आ जाते हैं। अगर आप फेसलेस बना रहे हो अपनी प्रोफाइल तो दे विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिटन यू नो द डॉक्यूमेंट, द वर्ड्स। तो पिक्चर मत लगाओ, इंटरव्यू में देख लेंगे वो आपको, क्या दिक्कत है। हेलो। But we are into the sales domain, ma'am. So हाँ definitely we हाँ, need कोई to. चक्कर नहीं है, Mm-hmm. कोई चक्कर नहीं है। मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ, इफ यू हैव लाइक दिस, इफ यू यूजिंग दिस फॉर्मेट, I can Mm-hmm. assure you this is the like the it is simple, I understand, but it's like a simple but effective format. Okay. और अगर आपकी इट इज योर पर्सनल विश, अगर आपको है कि नहीं मेरे को तो अपनी फोटो लगानी है, आप लगा लो। ऐसा कोई रिजेक्ट नहीं करेगा आपको इस वजह से कि आपने रेज्यूमे में अपनी फोटो लगा रखी है। जस्ट दैट आई फील पर्सनली कि विदाउट पिक्चर इट्स बेटर। If I want to get it done, my resume with any professional, so any suggestions for that? देखो क्या होता है, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग देयर रेज्यूमे मेड फ्रॉम यू नो प्रोफेशनल्स। Yeah. जो आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, what you have experienced, that person might not be able to you know write that down in a way that you can write that down, ठीक है। तो मेरे Very हिसाब true. से आप किसी और से रेज्यूमे बनवाने से अच्छा है आप खुद बनाओ। आई हैव दिस सेशन ऑल्सो, मैं बनाती नहीं हूँ आपका रेज्यूमे, मैं आपके साथ बैठ के we discuss, so you are also participating in that and I am also participating in that way आप हेल्प ले सकते हो प्रोफेशनल की, कि आप दोनों बैठ के बना रहे हो, है ना। Yeah. यू आर Yeah. ऑल्सो शेयरिंग योर इनपुट्स कि मैम ऐसा नहीं, आई वांट दिस ऑल्सो टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मैंने ये सेल्स किया था, मैंने इतना Mhm. रेवेन्यू जनरेट किया था, या मैंने इतना यू नो वट एवर द नंबर्स आर। तो अगर आप ये वाली सर्विस पे जाओगे वेयर you are kind of having a session where you are kind of having a mentor to guide you through the resume bit, that is a better approach. Okay. Okay. Sure. Sure. Thank you. Thank you very much. I got it. Okay, no And problem. I'm also good follower of your Instagram from the 6 months. Thank you very much. Thank you. Yeah, we'll continue with the presentation. Yeah, sounds good. Yeah. I think there's no other questions left, so we can go ahead. Okay, great. Yeah. So you understood what is an ATS friendly resume and how you can make your resume ATS friendly. In simple terms, you check the job description and you make your profile or you make your resume in a way that it has the relevant keyword, it has a simple format, and it incorporates everything that you know is relevant to that particular profile. That is, in simple terms, an ATS friendly resume. Okay. Now, very important thing. So when we after ATS, one second. So after ATS, the resume passes to the recruiter. अभी पहले क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है, 1000 एप्लीकेशन फॉर वन रोल, तो सारी की सारी तो रिक्रूटर्स नहीं देख पाएंगे, so they take the help of ATS, जो कि बॉट है या फिर यू नो लाइक अ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उससे उन्होंने स्कैन करवा लिए जिनके पास राइट कीवर्ड्स हैं और जो टॉप रैंक्स आ रहे हैं, वी विल गेट देम, राइट। तो अब एज अ रिक्रूटर व्हेन आई एम स्कैनिंग दोज रेज्यूमे, व्हाट डू आई लुक फॉर? अभी तक तो एटीएस क्या देख रहा था, राइट। अब सेकंड स्टेप, व्हाट रिक्रूटर्स लुक फॉर इन अ रेज्यूमे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट when we are scanning or when we are screening resumes, हम एक रेज्यूमे पे ज्यादा से ज्यादा 7 seconds लगाते हैं, ठीक है। And in 7 to 8 seconds, we are able to identify that if this candidate, we can put it in the you know shortlisted list or the rejected list. दो ही लिस्ट होंगी, है ना, shortlisted for next round या फिर reject.
तो 7 सेकेंड्स के अंदर आपका रेज्यूमे या तो रिजेक्ट हो जाएगा या शॉर्टलिस्ट हो जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। अभी वो 7 सेकेंड्स कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? सबसे पहला, लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन। तो सबसे पहला वो 2 सेकेंड्स जो है आपके करियर समरी पे लगाएंगे, जो हमने अभी करियर समरी डिस्कस करी, राइट? उसके बाद वो आपका 2 सेकेंड लगाएंगे की स्किल्स पे, फिर बाकी 2 सेकेंड्स लगाएंगे वर्क एक्सपीरियंस में। दिल ट्राई टू स्कैन योर कीवर्ड्स इन योर वर्क एक्सपीरियंस, नंबर्स देखना चाहेंगे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया वो देखना चाहेंगे, एंड द रिमेनिंग 1 सेकेंड और योर क्वालिफिकेशन। बस इतना ही टाइम से वो जज कर लेंगे इफ योर प्रोफाइल इज रेलेवेंट टू देम और नॉट रेलेवेंट टू देम। उनका मेन काम होता है कीवर्ड स्कैन करना, राइट? मतलब इम्पैक्ट कीवर्ड्स यही। नाउ आपने देखा इसमें सबसे पहले आ गया हमारा समरी। सबसे पहले एज अ रिक्रूटर आई लुक एट द समरी, देन आई लुक एट द टेक्निकल स्किल्स। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको समरी कैसे लिखनी है, टेक्निकल स्किल्स के लिए आपको सिंपल वही करना है। आपको बाकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जिस टाइप के जॉब डिस्क्रिप्शंस में आपको इंटरेस्ट है या फिर जो आप जिन जॉब्स के लिए आप जाना चाहते हो, उन जॉब्स के अच्छे से रीड करो, पिक आउट कीवर्ड्स फ्रॉम देम, पिक आउट कीवर्ड्स दैट आर अपीयरिंग अगेन एंड अगेन, कि एक रेज्यूमे इसमें भी है, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में भी है, तो मतलब ये तो सब मांगते ही हैं, राइट? सो पिक दोस कीवर्ड्स एंड पुट दीज इन योर टेक्निकल स्किल्स। दीज कुड बी फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाह रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स से जो भी रिलेटेड है, ठीक है, टैब्ल्यू है, पावर बीआई है, एसक्यूएल है, व्हाटएवर इट इज, पुट दिस हियर। अब यहाँ पे भी 2 चीज आ जाती है, ठीक है। एक तो आपका आ जाता है टेक्निकल स्किल्स। अगर आपकी प्रोफाइल टेक्निकल नहीं है, ठीक है, देयर वुड बी पीपल जिनको जो टेक्निकल प्रोफाइल में नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर टूल्स नहीं है, राइट? तो यू कैन राइट योर की स्किल्स, और उसमें आप फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और नेगोशिएशन स्किल्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप वो कीवर्ड्स जो उनको चाहिए एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोफाइल में आप फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स में है या फिर किसी टूल को यूज कर रहे हैं तो पुट द टूल्स देयर। अगर टेक में है तो पुट द टेक्नोलॉजीज देयर। एनी क्वेश्चंस हियर? No doubts, no doubts. It's all good. ठीक है, ओके। अभी आफ्टर योर की स्किल्स और आफ्टर योर टेक्निकल स्किल व्हाटएवर यू आर राइटिंग हियर कम्स योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप अपना इम्पैक्ट लिखोगे। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, आपको जो भी आपकी जो जॉब थी, लास्ट जॉब, आपको उसमें जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप सीधे वो कॉपी पेस्ट कर देते हो, ठीक है। वो तो जो आपका बराबर में कुलीग बैठा है, सेम ही तो रेज्यूमे है उसका भी, सेम ही काम किया उसने भी, राइट? तो उसका भी सेम होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने स्पेसिफिकली जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है, जो नंबर्स आपने लेके आए हो, ठीक है, वो डाल रहे हैं। तो आप हाईलाइट करो सबसे पहले 1 या 2 लाइन में कि आपका क्या काम था यहाँ पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड देन अगर आपका like if your whatever your experiences, you have worked in projects, first project, second project, आप ऐसे करके लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपका प्रोजेक्ट है आपको सिंपल अपना एक्सपीरियंस लिस्ट डाउन करना है तो आप इन बुलेट पॉइंट्स अपना एक्सपीरियंस लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो छोटी छोटी यहाँ पे गाइडेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप पहला वर्ड जो अपना लिख रहे हो ना, इट शुड स्टार्ट विद लाइक एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जैसे लेड, इफ यू आर लीडिंग अ टीम, सो लेड अ टीम ऑफ, start with that, or enhanced or transformed, right? So whatever impact you have created, उस impact से start करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप numbers लिख सकते हो ना यहाँ पे, तो मतलब बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने यहाँ if you read within project, I have written remember to add data points and metrics. So कितना revenue increase हुआ by कितना %, अगर आप percentages में लिख सकते हो, या कितना अगर आप सोशल मीडिया में तो कितना एंगेजमेंट इंक्रीज हुआ आपके रोल से। तो वट एवर यू कैन पुट डाउन एज इम्पैक्ट, राइट दैट डाउन हियर, ठीक है। और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। आप अगर आपको कुछ कीवर्ड्स हैं आप उनको बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर सिंपली अंडरलाइन कर सकते हैं।
these are some pointers that I wanted to share here. इसके अलावा, if any of you have any question, you can let me know for the experience section. Guys, please feel free to unmute yourself and ask these questions. आप चाहे तो chat में भी लिख सकते हैं, हम वहां से भी questions read out करके आपको address कर सकते हैं. अगर आप नहीं चाहते कि unmute करके बोलना, आप chat पे लिख दीजिए, हम वहां से आपके questions address कर देंगे. Any questions, guys? किसी का कुछ भी सवाल है? Yeah, hi Sejal. Yeah. I have a question, but it's not related to experience field. Like it's in अच्छा. general to resume. If it's okay, I can ask right now or later. Yeah, tell me. Actually, I have passed out in year 2021. Then I Mhm. had a year gap and I joined my company in 2022. Mhm. Then I left it in July 2023 and pursued MBA through distance. Okay. How can I cover that gap thing in my resume if there is any need to tell? आप अपना अब इतना लंबा आपका गैप नहीं था, ठीक है. You can since after your gap you worked for some time and then you all again went on for your higher education. In that gap also you can show some course, or if you upskilled yourself, if you learned a new skill, तो आप वो डाल सकते हो in your extra certifications, and वो उसमें वो डेट डाल दो. And if they ask you तो आप बोल सकते हो कि at the end you have to justify कि आप खाली नहीं बैठे थे उस टाइम पे, आप कुछ अपस्किल कर रहे थे, या आप कुछ you were learning something new, या फिर आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, whatever, something to enhance your skills, or you're working on yourself. तो अगर आप कुछ ऐसा mention कर सकते हो, then it's well and good. Okay, thank you. Yeah. We also have a question from Shweta. Mhm. She's asked like, how is there any specific format that she can follow while entering the experience in there? She's a DevOps engineer, so any suggestions that you have for her? So I would suggest that you write your experience in pointers, or bullet points. 4-5 points are enough. You start those bullet points with action verbs. These action, I'll also share a list of action verbs that you can use. Just 1 second. As I told you, some could be like led, transformed. If you are into leadership role, delegated, or coordinated or analyzed, you start your bullet points with these like action verbs. Or if you are into research, you can write interpreted, or investigated, or examined, or conducted, right? Or like reviewed. These create impact, right? And in technical, say if you are a DevOps engineer, you can like write as streamlined, or assembled, upgraded, programmed, engineered, remodeled, repaired, all of these. So I'll send this list of action verbs. Actually, there's a guide that I recommend to all my candidates. It's actually a guide by Harvard Business School. So you just have to type Harvard resume template on your Google search. And all of this, like these action verbs, even they have like a very simple format layout, very similar. It's almost like this, a little different, but then like in the similar line. So you can use that, or you can use this one that I can share with you. So that guide is like a foolproof guide for you for writing your resume. Pick the action words from there, and if you want to take help from ChatGPT, just explain your whatever you have done. आपने क्या अचीव किया अपने रोल में. अगर आपने कुछ प्रमोशन मिला, आपने कुछ एक प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करे हैं, राइट? या फिर आपका कुछ भी इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया, वो सब लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनाई पे, एंड वहां पे आप लिख दो कि this was what I was handling in my last company, and this was the impact that I was able to create. Please write my work experience in pointers, and start with the action verb. आप ऐसे लिखोगे ना, वो action verb से ही start करेगा, ठीक है? और आप लिख सकते हो कि ये impact create किया, ये numbers हैं, ये भी incorporate कर दो, वो भी कर देगा. So you can take help from ChatGPT as well to write these pointers.
and then obviously like tweak and change some prompts, and आप वो mix and match करके you will get the right desired pointers for your resume. Shweta, does that answer your question? Okay, while we wait, I think we have Pratiksha also wanted to ask a question. Yeah. Yeah. Hi everyone. So I have a Hi question Pratiksha. like, yeah, is it necessary to modify our resume each and every time as per the JD given? See, there would be some JDs that are almost, same. इतना ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपके एक सीवी आप बनाओगे 3-4 टाइप के मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में चल जाएगा, ठीक है. बट समटाइम्स जो आपका जॉब टाइटल होता है ना वही अलग है, ठीक है. आप अंदर पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि आई कैन डू दिस एंड आई हैव सिमिलर और रेलिवेंट एक्सपीरियंस, बट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ना. तो उस केस में जिसका बिल्कुल रेलिवेंट या एग्जैक्ट होगा वो तो टॉप पे रैंक कर जाएगा ईटीएस में, राइट. आप थोड़ा पीछे रह जाओगे. उसके लिए भी रेकमेंड कि आप थोड़ा सा टेलर कर लो रेज्यूमे को, इनकॉर्पोरेट द कीवर्ड्स. अपना जॉब टाइटल को थोड़ा सा, आप जहाँ एक समरी लिख रहे हो तो आप वहां पे वो एग्जैक्ट जो उन्होंने लिखा है जॉब टाइटल में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो. तो इससे आप थोड़ा अच्छा रैंक करोगे. तो सारे रूल्स के लिए आप चेंज मत करो. जस्ट मेक श्योर that for a particular set of job description you have a customized resume, and for the other set of job descriptions you have another one. So do it like that. Okay, fine. Yeah. Thank you. Thank you. I think Alvi. Jia also wanted to ask a question. Okay. Ma'am, actually, I'm pursuing 2 trainings simultaneously. Can I show this? Yeah. You are a student, you can multitask and you can have 2 projects simultaneously. It's not like anything wrong that you're doing, so you can easily put this. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Should we move ahead, Dipanjan? Is there any other question anyone else wanted to ask? I think Pratiksha, Shweta, you guys wanted to say something? Pratiksha, Yeah, anything I'm else? done. Yeah. Yeah, Okay. actually, the problem I'm facing is like, see, I've completed my education in HR, MBA HR, right? So I have an experience of like in the recruitment for 3 months as an internship, and then in the payroll executive and payroll associate. Okay. Okay, so How long now have I you worked as a go. payroll executive? Uh, it's like 1 year now. Okay. Yeah. And now I want to go into the core HR. Like it should be like something HR operations or HR generalist profile. Generalist. Okay. Yeah. Yeah. So what happens, my resume is totally about the payroll. Okay. So HR operation team also does the work of the payroll side. Okay. So what happens? The company put on the JD for the HR operations, but my experience is of payroll associate. So how can I go through this? Like I'm facing some of the difficulties in these points. तो आप पता क्या करो, पहली चीज आप अपने जो आपका करंट एक्सपीरियंस है ना उसको खाली पेरोल एग्जीक्यूटिव ना लिख के पेरोल एंड ऑपरेशंस लिख दो. पेरोल के अंदर भी तो ऑपरेशंस होता है ना. बाय That's दैट what, yeah. आप बाय दैट सिंपल ट्वीकिंग आप ऑपरेशंस वाले कीवर्ड्स में आने लगोगे, ठीक है. अभी पेरोल्स एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव अगर आप लिख देते हो, अंदर आप पेरोल्स के पॉइंटर्स तो लिख रहे हो, आप कुछ ऑपरेशंस के पॉइंटर्स लिख सकते हो, राइट. एंड आपका रिक्रूटमेंट का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है. ब्रिंग दैट अप इन योर आपका इंटर्नशिप है ना, वो इंटर्नशिप को आप एज एन एक्सपीरियंस दिखा दो. एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में लिखो उसको, एंड आप उसमें लिखो Okay. क्योंकि आपका वो उसमें रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है. अगर आपका रिक्रूटमेंट है तो ऑब्वियसली यू वुड हैव एक्सपीरियंस विद कैंडिडेट एंगेजमेंट, राइट, ऑनबोर्डिंग. Yeah. तो ये सब भी ऑपरेशंस में आ जाता है. तो ये सारे Yes. की स्किल्स या फिर ये सारे कीवर्ड्स आप अपनी समरी में लिखो. रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, ऑपरेशंस, पेरोल, कंप्लायंस, आप ये सब लिखो ऊपर कि आपने बिकॉज यू टच्ड ऑल ऑफ दैट. तो आप अपनी समरी में ये कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करोगे तो यू विल गेट बेटर मैचेस फॉर ऑपरेशंस रोल.
एंड Yeah, आप yeah, yeah. generalist word डालो अपने like resume में, और Uh-huh. I think this would be it. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Any other question, guys? Anyone else wanted to ask anything? Okay, we can go ahead. Yeah, yeah. Sure. So after your pointers of your experience, as I told you, well, in a like you can just mention the company, your title, your state or country, and then your like from what date to what date, not exact date, but then month and year, from which month you started the job and till when. If you're continuing that job, you can write present and then start the pointers. 4 to 5 pointers would be enough. If you have multiple projects within the same company, you can have different sections for project 1 and project 2, and then you can similarly do this for the next company. After that, you can write your education. Now here is another catch. If you are a fresher and if you want to highlight your education, because that's the the very recent thing that you're doing, you can put this experience section, this education section, education and other, at the top. After your technical skills, put your education here and then put your internship experience. ठीक है, अगर आप फ्रेशर है, अगर एक्सपीरियंस है तो सिर्फ आपका एजुकेशन नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले सबसे रीसेंट चीज लिखते हैं एंड देन द एजुकेशन एट द एंड. After this, you can write languages. Agar if your role is it depends on languages. अगर जैसे आपका टेक का रोल है तो I don't think you need to write what languages you speak. But अगर आपका सेल्स का रोल है तो अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है, that's an edge that you have to write that down. कि आपको एक लोकल लैंग्वेज आती है and then you know English, then you know Hindi, native, fluent, proficient, whatever it is, आप mention कर सकते हैं. After that, you can also write your certifications. Certification का भी same column आप बना सकते हैं. You can add your courses, your certifications. खाली सर्टिफिकेट्स होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सर्टिफिकेट से क्या सीखा एंड क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या आपने कुछ सीखा एंड वो इम्प्लीमेंट किया, यू नीड टू जस्टिफाई दैट. तो वही सर्टिफिकेट्स डालो जिनको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोफेशनल करियर में एंड जिनके लिए आप जस्टिफिकेशंस दे सकते हो. इसके बाद जस्ट एज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, आई रिकमेंड कि आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज डाल सकते हो एट द एंड. तो इससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है विद द the recruiter or hiring manager, so you can add some interests or your hobbies, and that may start a conversation. Any questions here? We have one question from Afreen. She's asked, she has an experience of HR recruiter, but she's looking for something work from home domain. So is there any suggestions that you have for her? This question is from Afreen. Afreen. Hi Afreen. तो अभी क्या है सीन कि सारी मतलब आप ये सोचो कि there was 2020 then most of the jobs were remote, right? अभी सारी जॉब रिमोट नहीं है, ठीक है. A lot of jobs are hybrid or work from office. अगर आप वर्क फ्रॉम होम स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं ना, तो आप पहले ना सर्च करो वर्क फ्रॉम होम जो कंपनीज दे रही हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनियां दे हैव मेड अ रूल कि वो देंगी ही नहीं वर्क फ्रॉम होम. तो आप पहले रिसर्च करो, आप कंपनीज ढूंढो जो वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, हाइब्रिड दे रही हैं, ठीक है. आपको जब ये कंपनीज मिल जाएं, आप सिंपली या तो आप नौकरी पे ढूंढ सकते हो, अपना ऐप पे ढूंढ सकते हो. यू कैन सर्च, आई थिंक अपना पे भी देयर इज अ फिल्टर फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स. Correct. There is. Yeah. देयर इज. सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे फिल्टर होता है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का. तो आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स डाल के देखो, या आप सिंपली गूगल पे, व्हेन यू ओपन गूगल एंड व्हेन यू क्लिक ऑन गूगल जॉब्स, तो वहाँ गूगल जॉब्स पे ना सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई भी जॉब है, आप पर्टिकुलर अपना जो भी कीवर्ड डाल रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लिख दो, आप वहां से भी देख सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि पहले आप वो शॉर्टलिस्ट कर लो कि कौन सी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, एंड देन यू टारगेट दोज कंपनीज एंड दोज रोल्स. अदरवाइज तो आप बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करोगे एंड एट द एंड यू विल फाइंड आउट, ओ दे डोंट गिव वर्क फ्रॉम होम. तो सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट.
फर्स्ट रिसर्च, फाइंड आउट कंपनीज, उन कंपनीज की लिस्ट बना के उनके रिक्रूटर्स को रीच आउट करो या उनके हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करो, और like go through a referral, whatever. Just make sure कि आप राइट लोगों को रीच आउट कर रहे हो. Afreen, does that answer your question? Do you have any other doubts? और कोई doubts है आपके? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. नहीं, ठीक है. या आई थिंक वी कैन मूव ऑन. अगर किसी और के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं. या आई थिंक वी कैन गो अहेड. या तो यही है बेसिक एक रेज्यूमे का टेम्पलेट. ठीक है. इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग. आप अवॉइड करो कि आप अपना लाइक पर्सनल डिटेल्स लाइक आप मेंशन कर रहे हो लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बहुत सारे रोल्स में ना ऐसे होता है कि इफ दे सी दैट समवन इज लाइक से 35 years of age, तो वो वहीं पे ही जज कर लेते हैं रेज्यूमे में कि अरे नहीं, ये तो वी आर हायरिंग फॉर अ यंग टीम, वो वहां से आगे नहीं लेके जाते, राइट? तो अपने आप को क्यों वो डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहे हो अपने लिए, राइट? आप पहले इंटरव्यू दो, मे बी दे लाइक यू इन द इंटरव्यू, फिर वो एज वाला आए ही ना बैरियर, राइट? तो आप ये सब चीजें मत लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ रहने दो लिखने के लिए, नो नीड. ठीक है. इवन लाइक लाइक माइन्यूट डिटेल्स अबाउट यू आप मत लिखो, इट वुड बी बेटर. इसके अलावा लाइक मेक श्योर कि अपनी रेज्यूमे से जो आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो, whatever you have summarized in your resume, you have a very similar personal brand on LinkedIn. तो इसी को ही आप रेप्लिकेट करो लिंक्डइन पे, अपना ये समरी यूज करो. उसकी लाइक समरी लिखने में हेडलाइन यू कैन राइट, यू कैन ऑब्वियसली बाकी सब चीजों के लिए लिंक्डइन के लिए भी यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी और जेमिनाई, similar as you've done for your resume. But just make sure कि you impersonate this resume on your LinkedIn profile as well, so that your holistic personal brand gives an impression of that like a professional who is actually proficient in that particular skill. तो खाली रेज्यूमे देख के नहीं, अगर आपके रेज्यूमे से वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपके जा रहे हैं, तो लिंक्डइन पे भी आपने सेम मेंटेन कर रखा है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल? Pratiksha has. Anyone else? Okay, great. तो एक्टिव रहो लिंक्डइन पे, है ना? अपने रेज्यूमे आपने अच्छे से बना लिया, तो इसी रेज्यूमे की हेल्प से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी, उसके वर्क एक्सपीरियंस में भी सेम पॉइंटर्स लिखो, उसके वर्क एक्सपीरियंस, उसके समरी या हेडलाइन भी ऐसे ही लिखो. एंड देन इट इज लाइक अ प्रूफ ऑफ वर्क फॉर यू. आप जो भी कर रहे हो, आप वहां पे अपना इम्पैक्ट या फिर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या वट एवर यू आर अचीविंग, अगर आपका भी प्रमोशन हुआ है, वट एवर, पुट दैट अप देयर. ठीक है. वो आपकी ऐसे बोस्ट करने की वॉल है जहाँ पे आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हो, है ना? तो मेक श्योर दैट इज अपडेटेड एंड यू हैव incorporated everything that you have been doing and have done in the current role. We'll move to the Q&A session. Anyone, any question that they would want to ask? Yeah, I think Rajita had one question. She was asking for a sample resume. So I'm sharing the link that you mentioned, right? So from Harvard I will, template, right? So yeah, I think, yeah, I'm sharing it on chat here. yeah. That as well as I'll the one that I am also using, I'll send it to you. I'll share a like a WhatsApp group where I'll share these like documents as well. Sure, sure. अभी आपके पास कोई भी सवाल है, आप डेफिनेटली अपनी माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. आप चाहे तो चैट पे भी लिख सकते हैं. प्रतीक्षा, आपका कोई सवाल है? Yeah, my question was same like for the samples of the CVs like. Right, Sure, right. sure. No problem. I'll share the sample. As I told you, one is the Harvard resume template. You just have to Google search this and you'll find a PDF file. One is of 10 pages, one is of 20 pages, one is for, like, you can check out both. They are quite similar. Just look at those files and you'll, it's like a complete guide. So you'll find key, like the action verbs and how you need to write what,
what are the do's, what are the don'ts, everything is listed there. And the resume template that I use, I'll be sending it across. I'll just Yeah. make a group, career GPT resources, and you can like, I'll share this resume template there, so you can pick that up, edit, make changes and use that for yourself. Sure, sure. That would be so helpful. Thank you. Anyone else, guys? Any other question that you want to ask? Yeah, Manjushri, please go ahead. Yeah, I just joined it. Just saw a link. I was busy whole day, so I have no idea when did you start this session and not. So I have no idea what you discussed not. But what I heard No is just that problem. there's no need to mention date of birth in resume. But how can that be avoided? That like every resume it has to be mentioned. And may I know what WhatsApp group is it, or if you Okay. have taken a session? Mansha, to brief you down what we discussed, I'll just share this template with you, and what I was trying to say by Okay. saying that you can avoid writing your date of birth, you can avoid sharing your picture. I just that's my personal opinion, because because of these things you kind of get discriminated on your resume itself. So I recommend you can skip it, and if you want you can obviously put it. It's just a recommendation, number one. And you were saying that without it, how will what we need to add. So I'll just share what are the like the pointers that you definitely need to add. So first would come your name, then your state or country. Don't put your complete address, just your city or country, and then your phone number, your email address, and your LinkedIn profile link. Now, Okay. after this, you can put your technical skills. If you're not from a technical background, you can put your key skills or your tools that you have used. Whatever keywords are there in the job description, just go through a couple of job descriptions and then add those keywords which are relevant to your profile here, right? Okay. The meaning of an ATS friendly resume is you are making sure that when the system is scanning your resume, he's picking up the correct keywords that are there in the job description, also from the resume. So, it matches the job description and the resume is actually matching, right? That's the crux of it. Now, after your key skills, you write your professional summary or your professional experience section. You can write your company name, your title, your state, or your the duration with which you work there, and then start these like experience section with bullet points. 4 or 5 bullet points are enough. Start these bullet points with an action verb. Could be action verbs like led, transformed, or like analyzed. It shows impact, so whatever impact you created, or whatever you were able to achieve there, you start it with that. And I would suggest you put on data points or metrics, like if you are into sales role, so if you increase in a certain percentage of revenue, if had a certain percentage of profit, whatever numbers you were able to generate, or you say if you were able to generate an engagement by a certain percentage, write numbers there. It shows कि आपने actually क्या impact create किया और आपके presence से क्या मतलब company को क्या value add हुआ. So make sure कि आप value add कर रहे हो यहाँ पे, right? इसके अलावा आपने अब जब अपने एक्सपीरियंस के 4-5 पॉइंटर्स लिख दिए, आप अपनी एजुकेशन लिख सकते हैं, योर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन ईयर. अगर आप रीसेंट ग्रेड हैं तो आप अपने लाइक जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी लिख सकते हैं, राइट? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपका कोई रोल है जहाँ पे लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, लाइक सेल्स रोल, तो आप अपनी लैंग्वेजेस, लाइक लोकल लैंग्वेज अगर इम्पोर्टेंट है तो लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, whatever is the local language, आप लिख सकते हैं. And then you can write your certifications, any course that you have done, any certification, PMP किया है या कोई भी certificate किया है, क्या duration था, whatever it is, आप अपने certifications, the certifications should be relevant to your overall profile. You have to make sure or keep this in mind that this document, this resume is your personal brand. तो आप इसमें जो भी लिख रहे हैं, it should sync with one another. At the end, to make your profile or add a touch of personality, I would suggest you mention some interests or your hobbies. This could also act like a conversation starter for you.
that's pretty much about it. This is what we discussed, and I think you have had an idea of what we discussed. But there would be one more question about resume, that whatever experiences I have, so do I need to mention all the experiences or only those are relevant to the industry that I'm applying? अभी देखो सारे एक्सपीरियंसेस मेंशन करो, बट उनको ऐसे मेंशन करो कि उसका जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं वो हाईलाइट हो. फॉर एग्जांपल, आपका एक रोल था, आपका एक कोई फाइनेंस का रोल था, ठीक है. अभी आप जा रहे हो डेटा एनालिटिक्स में, बट आप फाइनेंस में भी डेटा हैंडल कर रहे थे, यू वर वर्किंग ऑन एक्सेल. तो आप वहां पे भी मेक श्योर करो कि आप कुछ कुछ पॉइंटर्स ऐसे लिखो जो आपके करंट या फिर एस्पायरिंग रोल से रिलेटेड हो, जो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हो. तो इससे क्या होता है, एक सिंक आता है आपकी प्रोफाइल में, एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ यू. तो आप वो में कोशिश करो कि आपके एक्सपीरियंस एक दूसरे से सिंक हो और ट्रांसफरेबल स्किल्स हाईलाइट हो. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Any more questions? Thank you, Soumya. I really appreciate this. किसी को और भी कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक a lot of people have asked for the template side, so will you be sharing a WhatsApp group link? Yeah, I've shared it with you, Dipanjan. You can share it across. Sure. Yeah. So I'll share the resources on this link, and whatever resources I stumble upon, I'll keep sharing it here. Sure. I'm adding I'm adding the link on the chat here. आप लोग सब इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इसमें ये मैंने पिन भी कर दिया है, तो आप चाहो तो ये और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. साथ ही साथ जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम अपना कम्युनिटी में भी ये चीज़ें शेयर करेंगे, एंड जो भी आज की इवेंट में आया था वो इस इवेंट का रिकॉर्डिंग्स एंड ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहो तो आप हमारे कम्युनिटी में ज़रूर आइए. हम ये चीज़ें पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे. आप मैंने चारुल के भी प्रोफाइल लिंक्स यहाँ पे शेयर किए हैं, आप उनको भी फॉलो कीजिए एंड टच में रहिए. आई थिंक दैट विल रियली हेल्प एवरीवन. Otherwise, in case there's any other questions, anything else that anyone wants to ask, we can go ahead or we'll draw towards a conclusion. Any final questions from anyone? I think we can wrap up now. Yeah. Okay. All right. So yeah, that's about it. So firstly, huge thank you, Charul, for joining the call and enlightening us with all these topics. A huge thank you to everyone here who joined the call and showed interest and stayed throughout. I hope this was a positive takeaway for you. We're really proud to be able to have the successful event and help people out in any ways that we can. Again, finally, just concluding here, for thanking Charul here to join and enlightening all of us. Yeah. Thank you, Dipanjan, for being a great host, and happy Women's Day, everyone. I hope you guys could understand what I was trying to say about resume, and you guys will come up with like a perfectly crafted resume for yourself. Thank you. Thank you, everyone. Have a good night. Bye. Bye-bye.